Okay. Good afternoon, everyone, and welcome to a session on averages, important questions on averages. So let's start. Good afternoon, everyone. Okay, yes. So let's start with the first question, and so see if you can. I'm giving you 2 minutes. S- Send me your responses. Right. Okay. So you can send me your answers, guys, if you have done this. So Utkarsh has given an answer. Yes. Unath has also given an answer. Okay, so the correct answer is 30. So let me solve this for you. Uh, the average weight of the students in a class of 45 kg is 45 kg. If a group of 15 students with an average weight of 60 kg joins the class, the average weight of the entire class increases to 50 kg. Okay, so I told you in average I've covered that whenever average increases, so a group of 15 students with average weight is 60. So they have their average weight more than the actual average of the class initially. So how much is the excess? Excess is 60 minus 45, which is 15. But this is 15 per student. And how many students have joined? 15. So the total excess is 225. Now this will be divided among uh, students. How many students? Initially, I don't know how many students were there. So now it will x plus 15. And the change in the average is increases to 50. So it increases by 5. So I can say that 225 is equal to 5x plus 75. So if 5x is 150, so x is 30. And these were the initial number of students in the class. So all those who have given the answer, right, it's very nice, right? Let's move on to the next. There's some student by the name Steve Smith, right? Uh, See, I hardly have any time left for making to make more videos on TMUA because my schedule is quite packed these days, right? So this is the maximum I could have done for you, and I'm so sorry I couldn't make more videos, but I will be, again today and tomorrow I'm pretty busy, so hardly any time.
Yes, Rohit, I will be doing them. So the answer to this is Mahi has given the answer, and that is 12. My 12 is not correct. Yeah, Utkarsh has given the answer. Pankhuri has given the answer. 17. Yes. Yeah, Unnat also. Yeah, hi. Right. Okay, so let's do this question also. They say the average weight of five-person in a group was 76, right? After 1 year, the average weight of the same group became 81. That means it increased by 5, right? And there were how many students? 5 students. So if you look at the excess, so total increase will be 5 into 5, 25. I can say directly. 5 students were there and average is increasing by 5. So the excess is 25. Excess means the total of the weight increase of all the 5 people. Total of all the increase in weight of all the 5 people. Right? So this is what I can say. Okay, if now they're saying if each person in the group gained at least 2 kg, हर किसी ने 2 किलो हर किसी का 2 किलो वेट बढ़ा है. What is the maximum weight that any person in the group could have gained? Right, maximum. So to maximize, I have to minimize the others, right? So maximize करना है तो सब बाकियों को minimize करना पड़ेगा. So minimize is minimum I can give it is 2. So 2 plus 2 plus 2, that means 8 for the 4 people. So 25 minus 8 is 17. 17 is the correct answer. So these kind of questions too often come, although these two were not that difficult to do, but such questions are asked quite a lot. Right. Okay, okay. Let's do the next one. Yes. This is a little on the higher side, right? Let's see how many of you can answer this.
Very good. Mai has given a right answer. Very nice. Yes, Vanshaj. Good. Very nice. Good, Rahul. Right. Not 68. Okay. Okay, so I'll explain this one. Now, in this question, they're saying after a batsman scored, yes, Mai. After a batsman scored 35, yes, good Parth, 35, 46, and 39 in his, yes, Vanshika also got it correct. Good. So 35, 46, and 39. These are the runs scored, which is equal to total of 120, right? 120 runs he scored in the फोर्थ सॉरी फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ इनिंग्स. तो ये इन तीन इनिंग्स में इसने रन बनाए हैं. अब वो कह रहे हैं कि ही ऑब्जर्व दैट इट्स हिज एवरेज रन स्कोर्ड पर इनिंग इन हिज फर्स्ट सेवन इनिंग्स was less than that in his first four innings. So let's say the total run scored in the first four is X. First four. So I'll say average of first four has to be greater than the average of the rest of the seven innings. This is what it says. Now, once I got this, now I can solve this inequality. I can say 7x is greater than 4x plus 480. So I can say that 3x is greater than 480. So I can say that x is greater than 160. So the total runs scored in the first four innings should be greater than 160. Now they're saying if the average runs scored per innings in his first eight innings was equal to 39. So total in the eight innings will be, total of eight innings will be 39 into 8, which is 8 nines are 72, 8 threes are 24, 312. 312 is the total in the of the eight innings. And I know if I have to maximize the runs in the eight innings, so I have to minimize the runs in the first four innings. बिकॉज फाइव सिक्स और सेवन इनिंग्स का टोटल तो कांस्टेंट है 120 है. तो मुझे इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज कि उसके एट्थ का एवरेज सबसे ज़्यादा हो, एट्थ का जो मार्क्स हैं वो सबसे ज़्यादा हो. सो आई टेक इट एज 161. 161, so this gives me 281. Now the moment I subtract 281 from this, I'm gonna get 31. So 31 is the maximum for the eighth innings. So this is how we could have solved this, right? ओके सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये मैक्सिमम मिनिमम वाले कैट में तो काफ़ी आते हैं इस टाइप के. सो इनको ध्यान रखना है. ठीक है, लेट्स डू अनदर वन लिटिल डिफरेंट ऑन दिस सम अदर कॉन्सेप्ट.
Yeah, very good, Vanshika. Yes, Vanshaj. Hmm. Okay, let me explain now. All those Rahul has given the good has given correct answer, right? See, in this, there are three varieties of tea, one, two, three, available in the market. Money bought a certain quantity of each variety. Certain, पता नहीं कितना है. The average cost per kg of one and two is 50. तो इसको एवरेज कैसे निकलेगा? सपोज मैं कहता हूँ एक का कॉस्ट है ए, फर्स्ट वाले का, उसका प्राइस है एक्स. दूसरे वाले का क्वांटिटी है बी, उसका प्राइस है पर केजी वाई. और सी और पर केजी प्राइस है जेड. दिस इज फॉर वन, टू एंड थ्री. से दिस इज केजी एंड दिस इज रुपीस पर केजी, राइट? So this is, suppose right. So इधर अगर हम बात करें तो यहाँ से जो हमें एवरेज मिलेगा, वेटेड एवरेज बोलते हैं इसको. तो अब मैं टोटल प्राइस निकालता हूँ. तो ये जो दे रखा है, ये 50 जो दे रखा है, वो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन टोटल क्वांटिटी ए प्लस बी इज 50. सिमिलरली अगर हम बात करें, फिर बी वाई प्लस सी जेड अपॉन बी प्लस सी is the next, which is 60. And finally, cz plus ax upon a plus c is given as how much? 68. So these are थोड़ा algebra specific है, but ये मैंने specifically इसलिए include किया है क्योंकि ऐसे questions आ रहे हैं आपके AT में जहाँ पे arithmetic में भी थोड़ा equations वगैरह dominate करते हैं. अब यहाँ से अगर मैं थोड़ा और सॉल्व करूँ तो मेरे पास बन जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 50a प्लस 50b, then bx plus cz similarly will be 60b plus 60c, cz plus ax is equal to 68a plus 68c. So this is what I have got. Now, if I, you know, look at this, so if I add all of them, so it becomes twice of ax plus by plus cz. On adding the three equations, I will be getting 118a plus 110b plus 128c. This is what I have observed. So if I divide by 2, so I get finally ax plus by plus cz
is equal to, this will be 59A plus 55B plus 64C. Now if I compare the two equations, तो हमें quantity तो नहीं पता चला, but उनका prices पता चल गया, x, y और z की वैल्यू. सो एक जो तीन वैरायटी थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनमें फर्स्ट का प्राइस है 59, सेकंड का प्राइस है 55 और 64 थर्ड का है. इतना हमें पता चल गया. बट इससे अब इतना पता है हमें, अगर हम तीनों को मिलाते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, तो जो एवरेज है वो हाईएस्ट वाले के प्राइस से ज़्यादा नहीं हो सकता है और लोएस्ट वाले प्राइस से कम नहीं हो सकता. मतलब द एवरेज कैनॉट बी मोर देन 64 एंड कैनॉट बी लेस देन 55. So let's see the option. The only option is 65. So it is not possible. Rest all are possible. So this is how we can compare and say. But weighted average का मतलब हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, या एवरेज का कॉन्सेप्ट इन जनरल, कि कभी भी एवरेज हाईएस्ट वैल्यू से ज़्यादा और लोएस्ट वैल्यू से कम नहीं हो सकता. तो उसको देखते हुए सिर्फ 65 है ऑप्शंस में. राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. Yes, Vanshaj, 15th, today is 13th. Just message me before coming, huh? Okay, Vanshaj. Yes, Vanshaj. Yes, Vanshika, very nice.
Good, Anushka. Okay, let me explain. The average age of a group of people is twice the number of people in the group, right? So वो कह रहे हैं कि कुछ ग्रुप है जिसमें एवरेज एज जो है वो जितने लोग हैं उसका ट्वाइस है. A person X leaves the group and the average age is still the twice the number of people in the group. So एक्चुअली में देखा जाए तो कम हो गई है एवरेज, क्योंकि लोग कम हो गए हैं इसलिए एवरेज भी कम हो रही है. सो X जा रहा है तो okay. Now they're saying if another person Y leaves the group and the average age is still twice the number of people in the group, right? फिर से आप देखें तो ये आप if we consider average will reduce. If the ratio of ages of X and Y is 19 is to 17, then find the average age of the group if one more person Z of age 16 years leaves the group. So let's take X age as 19A and that of Y is 17A. Now, if X goes, so let's say number of people initially were N, so the average was twice N. So I can say average जब X जा रहा है तो लोग N minus 1 है और average हो जा रही है 2 twice of N minus 1. So if you look at it, so average has actually decreased by 2. Yes, Parth. Good. Average has reduced by 2 in a way. सो वो तब होगा जब जो जा रहा है x उसका जो एवरेज है वो पुरानी जो एवरेज है उससे ज्यादा है. तो वो कितना ज्यादा है, ये इसको हम डेफिसिट बोलेंगे. दिस विल बी डिवाइडेड अमंग n माइनस वन एंड दैट विल गिव मी द चेंज इन द एवरेज एंड एवरेज हैज रिड्यूस्ड बाय 2, सो दिस इज इक्वल टू 2. सो दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन दैट आई हैव गॉट. अब y के जाने से एवरेज लोग हो जा रहे हैं n माइनस टू and the average is still twice of that. So 2 into n minus 2. So now the average has become 2n minus 4. So actually में average अभी भी 2 से फिर कम हो गया. तो कहने का ये मतलब है y जिसका वैल्यू 17 है अगर उसे मैं उस टाइम की एवरेज जो कि 2n माइनस 2 से माइनस करूं सो ये डेफिसिट मिलेगा. दिस विल बी डिवाइडेड अमंग n माइनस 2 टू गिव मी 2. ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्लास एक्सरसाइज में. इफ यू रिमेंबर देयर वाज दिस यू नो दो एग्जाम्स की बात हो रही है. अगर एग्जाम्स के स्कोर हटा दें या ऐड कर लें, उसमें ऐड करना था तो एवरेज बढ़ रही थी, राइट? सो सिमिलर क्वेश्चन है. सो 19a माइनस 2n इज 2n minus 2 and if I look at the second equation, that is 17a minus 2n plus 2 equal to 2n minus 4. Now if I subtract, I will be getting 2a minus 2 is equal to 2. तो 2a हो गया 4, तो a की वैल्यू आ गई 2. अब a की वैल्यू अगर 2 आ गई, राइट, तो हमें चाहिए n की वैल्यू. तो n की वैल्यू यहाँ यहाँ पे अगर हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं तो 38 प्लस 2 इक्वल टू 4n. तो n इज 40 by 4. 40 by 4 will be 10. So this is what I have achieved. Right? So now they're saying कि अभी जो है एक 16 वाला चला जाए
If one more person, Z of age 16 years, leaves the group, find the average age of the group. एवरेज निकालना है हमें, है ना? अगर हम बात करें शुरुआत से पहले, तो हमारे पास लोग एन थे, 10 थे, और एवरेज 20 था, राइट? फिर लोग हुए 9, एवरेज हो गया 18, फिर लोग हुए 8, एवरेज हो गया 16. सो दिस इज द सिचुएशन, राइट? अभी 16 एवरेज है 8 लोगों का, और 16 वाला ही जा रहा है, तो एवरेज में कोई फर्क नहीं आएगा. सो एवरेज विल स्टिल बी 16. इज दिस क्लियर और नॉट? सो आई टोल्ड यू कि जब एवरेज के बराबर आप ऑब्जर्वेशन ऐड या डिलीट करते हो, तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 8 लोगों का एवरेज 16 है. सो इफ 16 वाला लीव्स, so average does not change, it will still be 16. So this is how we can do this problem, right? Do the next one. Vanshika, there's only one of them, not both.
Yes, Utkarsh, very nice. Okay, so let's see how we do it. Let the five positive integers be a, b, c, d, e. Again, little algebraic in nature, guys. But so a plus, when any four of these integers are considered and their average is added to the fifth integer, we get the following numbers. Now, अगर मैं पांच में से चार कंसिडर कर रहा हूं तो ऐसे कितने बनेंगे हमारे पास सेट ऑफ फोर 5C4 अगर हम PNCB लगाएं तो ऐसे पांच सेट बनने वाले हैं और पांच सेट में से हर एक चार बार आएगा जैसे ए आएगा BCD के साथ ए आएगा BDE के साथ राइट CDE के साथ और BCE के साथ तो आप देखोगे तो ए को अगर हम देखें तो ए हमारे पास जो आएगा जब पांच में से चार सेलेक्ट कर रहा हूं एट ए टाइम तो चार बार आएगा ऐसे ही हर कोई इंटीजर चार बार आएगा तो कहने का ये मतलब है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस इसका एवरेज प्लस ई से इज 41 ये पहला केस है हमारा अब ऐसे कितने बनेंगे पांच बनेंगे जैसे एक बनेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई अपॉन फोर इज प्लस डी इज इक्वल टू से 44 सो ऐसे चार इक्वेशंस बन जाएंगी हमारे पास five equations will be there corresponding to these five numbers so if I अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं इक्वेशन को ये पांच होंगी तीन चार पांच राइट आई एम नॉट राइटिंग देम आप इतना समझ ही जाओगे अब तो आप ये देखो कि एक बार आएगा 50 एक बार आएगा 56 एक बार आएगा 65 ये सम सिमिलरली बट अगर मैं इन पांचों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो ऐड करूंगा तो मेरे पास इन पांच इक्वेशंस में ए चार बार होगा बी भी चार बार होगा सी भी चार बार होगा डी भी चार बार होगा और ई भी चार बार होगा तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बाय फोर प्लस और ये पांच का सम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज फाइव विच इज 85 plus 65 is 150 256 सो इफ आई से तो ये बन जाएगा ट्वाइस ये कैंसिल हो गया ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज 256 so a plus b plus c plus d plus e is 128 now once I have achieved this हमारी पहली इक्वेशन थी a plus b plus c plus d by 4 plus e is equal to 41 now if I put the value of e as uh, a plus b plus c plus d as 128 minus e 128 minus e by 4 plus e equal to 41 so यहां से e का वैल्यू आ जाएगा so so I will be getting the value of e from here so वो बनेगा 3e equal to 41 into 4 164 minus 128 तो e आ जाएगा हमारे पास राइट 164 minus 128 right 3 so 14 minus 8 is 6 and 36 so e is which of the following gives just a minute have I made some mistake a plus b plus c plus d plus 4 plus e is 41 a plus this is 128 minus e 128 minus e plus 4e 41 this is 164 164 minus 28 is 36 right so e will be by 3 which is 12 so 12 is not in the option right so I cannot say that so similarly अब हमें जब ये 3e का पता चल गया तो हम अब डायरेक्टली यहां से इक्वेशन लिख सकते हैं 3d equal to 4 into the next number 44 44 into 4 44 into 4 देखो ये 164 था
41 into 4. So 44 minus 128. So once I have seen the pattern, I can do it, right? खुद कर सकते हैं अब हम. Right? 3D is minus 128. 16, 8 and 48. So D becomes 48 by 3, which is 16. Again, 16 is not there. Now, 3C will be, next number was 50. 50 into 4 minus 128. So this will give me 200 minus 128 is 72. So C is 72 by 3. 72 by 3 is 24. Is 24 there in the option? No, 24 is also not there in the option. Now next will be 3B is equal to, next number was 56 and next was 65. So 56 into 4 minus 128. So this will give me 324 minus, 224 minus 128. That is 6 and 96. 96 by 3 is 32, again not there. And the last one will be 3A is equal to 65 into 4 minus 128, which will give me 260, 260 minus 128. That is 132, 132 by 3, that is 44. So 44 becomes the right answer, which is there in the option. Yeah, we can later on, Utkarsh, you are right. We can put options also, which will make a little life little easy. Once we have done that, right, right, right. You're there, right? Because I've got the sum as 128. So if I take one of them as, say, the options there, so we can do that. But okay. But yeah, this is the actual method through which you can do this. Once after simplifying, yes, we can put options, but I'm a little skeptical again, because okay, yeah, we can put it here. Like if I put the first like 28 and check whether the sum is becoming or not. Yeah, sum becomes 128 or not. Yeah, we can do that. So we can find the value or put the options and check. Yeah. Okay. Next. Huh. Yes, yes, yes. Got it, Utkarsh. Yeah, fine.
Yes, Utkarsh. Good. Very nice. Okay. Waiting for others to answer. Okay, let me explain this. It says that on January 1st, 2003, the average age of 11 members of cricket team was 30 years. 30 years. After 4 years, a player X from the team was replaced by another player Y. After one more year, Y was replaced by Z, and as a result, the average age of the team then becomes 34 4 by 11. Now, लोग तो उतने ही रहेंगे 11, सिर्फ एवरेज में चेंज आ रहा है डिफरेंस की वजह से एक्स और वाई के और वाई और जेड के, इतना हमें समझ में आता है बिकॉज इट्स अ रिप्लेसमेंट हैपनिंग, कोई आ या जा नहीं रहा है. सो हम अगर थोड़ी सी बात करें कि तो एवरेज कितनी होनी चाहिए थी 5 साल बाद, राइट? आफ्टर 4 इयर्स कितनी होनी चाहिए थी? 34, सॉरी, हाँ 34 होनी चाहिए थी, क्योंकि 11 30 इयर्स है एवरेज, तो 4 साल बाद 34 होनी चाहिए थी. बट डिफरेंस y और x का 4 दे रखा है और एवरेज इसकी वजह से कम हो जाएगी क्योंकि x इज 4 इयर्स लेस देन y. सो 4/11 से एवरेज कम हो जाएगी. सो एवरेज विल रिसीव रिड्यूस बाय यापरनव, राइट? एवरेज विल रिड्यूस बाय 4/11, सो वो बन जाएगी 33 7/11. अब एक साल बाद उसे होना चाहिए था 34 7/11, बट वो हो रखी है 34 4/11. और वो क्यों हुई होगी? क्योंकि देखो नीचे तो 11 ही है, क्योंकि y ने z को रिप्लेस किया है और एवरेज 3/11 से कम हो रही है. सो कहने का ये मतलब है z y माइनस z अपॉन 11 शुड बी 3/11. सो सीधा सीधा y माइनस जेड आ गया आपके पास 3. सो इसे अगर हम डिफरेंस से करेंगे तो ये बहुत क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा. वी डोंट हैव टू नेसेसरली मेक इक्वेशंस फॉर दिस. यस, सो आंसर इज ए. दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, डू द नेक्स्ट वन.
No, Pranav, not 99. Waiting for the first correct answer. Yes, Pranav. Yes, 82 is the correct answer. So I'll explain this. There are n stones, each weighing 1, 2, and n respectively. These stones are placed in three bags A, B, C in the following manner. Bag A contains stones which are 1, 4, 7. Now, आप ये देखो ये AP में है और AP का जो एवरेज होता है, अगर टर्म्स AP में होती हैं तो उसका एवरेज जब होता है, ये मैं आपको बता भी चुका अलजेब्रा में भी और एवरेज में भी बताया था। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो एवरेज आता है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। और इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो मिडिल टू नंबर्स का एवरेज आता है जो डेसिमल में आएगा। तो वो कभी भी किसी भी स्टोन के वेट के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि सारे स्टोन्स के वेट इंटीजर्स हैं। तो सम ऑफ टू इंटीजर्स डिवाइडेड बाय टू कैन विल ऑलवेज एंड इन, या नहीं हो सकता है लेकिन सम इवन बन जाए, बट इट विल नेवर बी इक्वल टू द, जैसे 37 और 38 है, 39, आप कह सकते हो तीन का डिफरेंस है, तो एक ऑड होगा एक इवन होगा। अगर दो इवन भी बनते हैं, जैसे 3 है, 9 है, 12 है, राइट, तो बीच में 6 होगा। और सपोज हमारे पास है 3, 9, 6, 12 है, तो अगर मैं इन दोनों का एवरेज देखता हूं तो ये डेसिमल में जाएगा, राइट। सो दैट इज द, नो, 15/2। सो जो 7.5 है वो किसी भी स्टोन के बराबर नहीं होगा, उसका एवरेज ऑफ दैट ग्रुप जिसमें इवन नंबर ऑफ स्टोन्स होंगे, तो वो कभी भी किसी भी स्टोन के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि एवरेज, ये तो चलो नॉर्मल सी बात है, इज कैलकुलेटेड, इट इज फाउंड दैट एवरेज वेट्स ऑफ एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री बैग्स आर सेम एज द वेट of one of the stones in the respective bags, while average weight of the other bag is different weight of any stone in it. तो जब ऑड होंगे तभी आपके पास ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स होंगे, तो मिडिल टर्म जो होगी, मिडिल स्टोन जो होगा वही एवरेज भी होगा। बट इवन के केस में वो कभी भी, इवन केस में मिडिल टू स्टोन्स का जो एवरेज होगा वो कभी भी किसी भी इंडिविजुअल स्टोन के वेट के बराबर नहीं आएगा। तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि दो में ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स और एक में इवन, तो ऑड प्लस इवन, इवन एक तो इवन बनना चाहिए, तो इवन बनना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन रूल्ड आउट हो गए। दूसरा ये है कि जैसे ये 82 है, ऑड बनने चाहिए दो जगह, राइट, इवन, तो इवन
90 ऑड प्लस इवन और 82। तो 82 में अगर मैं 1 माइनस करूं, राइट, तो ये 27 और 28 ये बनता है, ये दो ऑड बनते हैं और ये हमारा इसके साथ इवन बनता है। सो इसलिए 82 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पे भी जो एवरेज आएगा वो मिडिल स्टोन के बराबर आएगा, इधर भी मिडिल क्योंकि एपी में है, बट यहां नहीं आएगा, यहां मिडिल 2 का एवरेज आएगा जो डेसिमल में जाएगा। तो इस वजह से द आंसर हैज टू बी 82। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? So this is all for the day today, right? Next session I'll take on Thursday on ratios and mixtures, right? Till then, take care. Have a nice day.